इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद इस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा है और ये मकाम है इस वक्त चौथे क्वार्टर फाइनल का। सियालकोट रीजन का मुकाबला होने को है लाहौर ब्लूज के साथ। बैंक अल-फला की पेशकश इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी कौमी T20 कप 2025 के जिम्न में। यहां तो टॉस हो चुका, तैयारियां मुकम्मल हैं, दोनों टीमों की नामजदगी भी हो चुकी। फरहान यूसुफ को आज मौका दिया है लाहौर ब्लूज ने, जो पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेटर हैं और बेहतरीन फील्डर भी हैं। बल्लेबाज होने के सिवा इमरान भट्ट, उमर सिद्दीक इनिंग्स का आगाज करेंगे। जुनैद अली विकेट कीपर हैं, हुसैन तलत कप्तान, हमाद भट्ट, कासिम अकरम दो नौजवान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मोहम्मद इरफान लेफ्ट आर्म स्पिनर, निसार अहमद और सलमान मिर्जा सीमर हैं और रिजवान भी बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं। सियालकोट की टीम और कायनात इम्तियाज। सियालकोट की टीम स्टार स्टडेड साइड हमेशा से रही है। इस बार भी सिर्फ एक चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, अयाज तसव्वर का जो इन प्लेस आए हैं अहमद हसन के, बाकी सेम साइड खेलेगी इनकी। शोएब मलिक, उसामा मीर, हसन अली, अब्दुल सुभान, अमाद भट्ट, सारी स्टार स्टडेड साइड है। सियालकोट ने फील्डिंग करने का फैसला किया है टॉस जीत के। तो अंपायर ने सिग्निफाई किया है, अंपायर नासिर ने, और ये पहली गेंद एक्शन शुरू हुआ चाहता है। तो बहुत ज्यादा तफरी यहाँ पर मैसर आ सकती है। और शानदार शॉट, दिलकश तरीके से इस गेंद को उठा खेला, बेहतरीन स्क्वायर शॉट मिसाली अंदाज में एग्जीक्यूट किया। रन्स ले चुके हैं यहाँ पे, कोई रैश शॉट नहीं था, सर्कल क्लियर करना था, बाउंड्री क्लियर की है यहाँ पे। ऑन द ऑफ खेला, हवा में थी लेकिन खाली जगह पा ली। शानदार शॉट उमर सिद्दीक का, और दिलकश, ये दिल नशी गेंद इनके पाले में जरूर थी लेकिन खूबसूरत शॉट खेला और स्मैश कर दिया। इस बार जगह बनाए, पीछे हटे और बेहतरीन आगाज अपने खेल में। और अब ये लेग साइड में एक और काबिल रश शॉट और गेंद पहुंच गई सीधी जीने पर। अच्छी जगह से ये बॉल किया है उन्होंने, लेकिन बेहतरीन शॉट खेला है, अच्छा पिकअप शॉट, बहुत ही अच्छा एलिवेट किया है इसे, अपनी बॉडी के साथ लेकर घूमे हैं। Straight hit and it'll be very safe. This is the idea of knowing where the fielders are and then taking those risks, and we've laid quite a bit of emphasis on that. Down the wicket, chance here. What a catch, what a catch. You need something like that to get your side back into the game. And he does not control the stroke, it goes in the air, loops to the fielder who makes great dive to his left side. Airborne was Mohsin when he took that catch. Just see that movement, wonderful movement, and Sialkot get the all-important breakthrough. Imran Bhatt has left 18 of 18. This is well played, played over extra cover, standing position, great shot. Oh, this is big. This is the use of the reach, and this will go all the way. Ahmad Bhatt taking Shoaib Malik, targeting him, taking him on. The reach. Down one knee, and he gets the ability to get underneath that and play it the way he did. पुल किया, फील्डर हैं पीछे और लग गई गेंद हाथ मोहसिन रियाज से, जिनके हाथ महफूज तरीन है, और अम्माद एक खराब गेंद पर आउट हुए। और T20 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। शायद नीचे रह गए, यहाँ पे मसला नहीं है, इस एंड पे बॉल तो मिल गया था, उस तरीके से पूरी एलिवेशन नहीं हासिल की, पोजीशन में भी आ गए थे लेकिन वो जान हासिल नहीं थी इस शॉट में। मोहसिन रियाज का दूसरा कैच, दूसरा अच्छा कैच कहेंगे। डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि आगाज मिल गया था इस इनिंग को, 19 रन बनाकर वापस गए, 68 पे 2।
रिवर्स स्वीप, रुकनी चाहिए थी गेंद दायरे में, लेकिन डाइव देर से की गई और 4 रन्स हासिल किए। बोल हो जाएंगे। कम बैक किया यहाँ पे मिर्जा ताहिर बेग ने। एक बार फिर कट करने गए थे, थोड़ा स्लो किया बॉल और विकेट हासिल की कासिम अकरम की। बोनस विकेट हासिल की। इस तरह की गेंद को इन्होंने स्वीप किया था, रिवर्स स्वीप कुछ देर पहले। बड़ी खौफनाक आवाज सुनने में आई। अंपायर ने कासिम अकरम जो 10 पर आउट हुए, इसके साथ ही पानी के वक्फे का भी ऐलान किया। Down on one. He's been trying that shot for a while and this time succeeds in clearing the fielder and the boundary. To get a maximum, just right in front of him. A little fuller delivery. Picked it rightly. Yes. Gun barrel straight. That's actually gun barrel straight. 50 for Umar Siddiq. What a shot that was. His 650 completed with that magnificent shot. The safest boundary, and what a shot that was. That's high in the air. That should be easy. Yes, it's gone. The wicket takes the limelight away from the cameraman and the other crew. But captain takes the catch at a very crucial stage. Junaid goes out. That probably will push the captain, Hussain Talab, to bring himself back. A rash shot that was. Of course, these are the last overs. They will have to go. Safe hands of Shoaib Malik taking an easy catch. And with that, Junaid Ali goes back for 12, 124 for 1. There is a chance. Fielder coming under and he takes it. The experience of Shoaib Malik getting the better of Umar Siddiq. He's disappointed because he got that line and a very smart catch. And he had the fielder over there, so the experience has taken the better of the set batter. As Umar Siddiq swept it in the air, looking to cross the rope, but there was no pace on the ball. 65 wonderful runs of 44 deliveries, and it's 5 for 139. Starts off with a bang, with a 6. All the way into the stands by Nisar. What a way to start your inning. And a no ball to add on to that. Nisar, oh no, no, no. That's a mighty hit. Wow, that's brilliant. Nisar Ahmed, you beauty. That is a proper club. And that is again gone, rose back into the members. So have a look at this, slow one. And great position that. Another one in the air this time. And there's a fielder under it. And he stepped over with the ball in hand. Another 6. This time, easy catch. And it's Mohsin Riaz again. He's taken his 3rd catch. Yeah, very important inning. The plan was simple, just to clear the fielder. Not quite the execution. And Mohsin Riaz makes no mistake one more time. Very important 21 runs by Nisar Ahmed. It's 164 for 6. Connection 6. What a way to announce yourself at this big stage. Farhan Yusuf from under 19 to the big boys with a 6. Is ideal for the batters out there. Yeah, this was pace on and taken from a length. Good position. He's clapped that one. Nice and handsome and long. And 6 from Hussain Talab this time. For a flat 6. Just look at that. Great extension of the arms. And this ball set up to be hit.
Well, you pre-plan, and an experienced campaigner like Hassan Ali would only bowl within the stumps. Yeah, Hassan Ali spot on, keeping his eyes on what the batter is doing, and then bullseye. Farhan Yusuf looked good for his 12 runs. He's got a good future. 184 for 7. Santalat has just made his partner run out. He wanted the strike so bad. He referred it to the third umpire. And now we know it. That's all that I can say. 3.3 overs bowled by Hassan Ali. 3.4 actually. He's conceded 42, picked up 2 wickets. Out. Straight to the third. Osama Mir makes no mistake. Wanting to go big, to gather many runs as possible. And in doing so, he's lost his wicket to Hussain Talat. Smartly bowled outside the off-stump cutter. He was trying to fetch it from outside the off-stump, thick outside edge, carrying it to third. 12 runs for Hussain Talat, 184 for 9 now. Right, the last delivery. Hassan Ali in the air, should be taken. Mr. Malik, Shoaib Malik takes it quite comfortably. 4 wickets and the 4 last deliveries for Hassan Ali, courtesy to 1 run out. That has been a brilliant end to this inning from Hassan Ali. Getting wickets, not giving away much in this over, just 7 runs coming with 4 wickets. Cutter into the surface. It's too experienced for the youngster. And Shoaib Malik makes no mistake. Probably they would feel they were touch a little expensive as far as bowling is concerned in those middle overs. 79 runs for 3, and last 5 overs 58 runs but taking 6 wickets. Lahore Blues batting card. Good opening partnership up front. Umar Sadiq 65 of 44 for the chief destroyer. Imran got 18 and then got stuck with lots of dot balls. Hamad coming in scoring 19. Qasim 6. Junaid came in for 12. And in the end, Nisar playing a cameo, getting them to 184. Did a good job. 4 wickets for Hassan Ali. 1 wicket for Malik, 1 for Hassan and 2 for Osama Mir. But a touch expensive, the bowling unit of Sialkot, as Lahore Blues take the total to 184. The target for Sialkot region is 185 at 9.25 runs per over. That's coming right after the break. Because a score put up by Lahore Blues is pretty good. Let's see how it goes. Salman. And Salman out there. Salman in the com box alongside me. It didn't work. Bat wasn't required. It was a very full delivery at the base of that off stump. I'm not sure if he's got a slight inside edge, but that was targeted very well. In a bit, and a wild hoik by Herrera going across the line, and he was in no position to play that stroke. And result is that he'll have to leave. Not of 4 deliveries. Great start for Lahore as Sialkot are 1 for 1. This one is swept fine. Well played from Tahir Beg. He's also used his reach and long levers to make that ball into this stroke. That's a good shot, but to the fielder, gone. Well, I'll call that a soft dismissal because he's tried to play it away from that fielder and long off, but he hasn't managed much. It is well bowled again. The key is the length. It's a high arm delivery. Look at the bounce. Yeah, he didn't get it on the middle of the bat. It was close to the stickers and just lobbed to the fielder on the boundary. And the fielder, Imran, is a very safe one. So Mohsen has to go very early, and Sialkot now under pressure. That's a shot in his zone.
Usually when you see that kind of turn, creates a doubt, but this time, to the luck of Tahir, it was... They're looking for the stability, but now he's picked that one up beautifully. This will go down to the boundary for 4. So yeah, this is good. The runs come from the both ends. He's picked one. He's picked the fielder. Ahmad Butt, the fielder. You can just never take this away from the game. He's so good with that wicket-taking ability. Short pitch was not able to get a hold of that one in the hand of the fielder. Hamad Butt was the fielder. Ayaz goes for 7, 35 for 3, Sialkot. That's hard, and in the gap too. That's a good start to Afzal's inning. You just could tell that he hits them hard. Yeah, it was in the air for just a little while and away from the fielder for 4. Great wrist work from Afzal. रिजवान तक और यहां पर आउट हो जाएंगे. विकेट के सामने हैं. जी हां, अंपायर ने सोचा जरूर और उसके बाद इत्तेफाक किया और मोहम्मद रिजवान को कामयाबी. और बीच में विकेटों का ये गेंद खा बैठे और कोई मौका नहीं था यहां पे बचने का. अंपायर नासिर हुसैन के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था जिसको उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ लिया. अफजल मंजूर विकेट कीपर, वो 10 रन बना सके. 54 पर 4 सियालकोट कामयाबी के लिए. और जो बड़े शॉट्स हैं ये नागुजीर हैं, इस बात को जान गए हैं ताहिर, और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर ये लॉफ्टेड शॉट खेला शानदार छक्के के लिए. खासे लंबे लंबे इनके हाथ हैं और ज्यादा करीब आ गए थे गेंद के, इसे उठा नहीं सके. लेकिन 6 न सही 4 रन मिल गए मलिक को. विप कर दिया उन्होंने डाउन द ग्राउंड. हुई होगी कि अटैक करना होगा रिजवान को, जो नौजवान हैं. और 50 रन मुकम्मल हुए. ताहिर बेग के बेहतरीन इनिंग्स, इनके करियर की ये चौथी और शायद सबसे अहम इनिंग्स T20 में. दाद के हकदार हैं. और ये शॉट गेंद और झपट पड़े इस पर ताहिर बेग और गेंद को दूर दे मारा. This spell is going to be very crucial, and this is what happened in the very last delivery. Picked up the length beautifully. He has the force, he has the power, he's got the result. Pulled away nicely. He knew it, that he's done a good job. He never moved Shoaib Malik after playing that shot, though it wasn't far away from that boundary rider. Oh yes, that's the big one. That's a huge wicket in the context of the game. It's Mr. Malik looking to accelerate and looking to find that boundary in the over, and in doing so he's lost his wicket. That's a big, big moment in the game. Provided that length for him to come down and smash it, and he missed it with that slight turn to beat that outside edge. Good glove work. He knows it's a big wicket for him, not just in the game but also for him as in a career. He can tell his kids and his uncles and aunties and friends, and he got Shoaib Malik out. 101 for 5 now. Crucial stage in the game. That's good. Good enough for 6. Tahir Beg, the lone warrior for Sialkot region. Yes, that's so important from his team's point of view. He's got to actually have a sort of an ignore button as to what's happening on the opposite side. Losing wickets, yes, but he has to now push the agenda. Catcher is the call and should be out. Should be. Yes. But takes the catch. And another wicket is lost. Ehsan trying one at the wide long on area has perished. He had to go big. He had to do it. He had to hit those 6s. And in doing so, he's lost his wicket. Didn't get that elevation. Ehsan Hafiz Bhatti scoring 1 run.
Sialkot region deeper in trouble. 108 for 6. Shot. He's hit that down all the way to Lahore. That's the way you go about it. Live or die trying. Oh, again in the hitting zone. A little too full, and this one has gone out of the park. Hassan Ali wants to win this match. More talent than he thinks as a batter, because he can hit sixes like this. That's a long hit. Something what Nisar did for Lahore Blues. Gave them that momentum with 3 sixes. Can Hassan Ali do the same? Yeah, he read that. He was waiting for that slower one, just held his pose for a fraction of a moment and then swung his bat like anything. Connecting one, because he's got a better technique. As you said, waited just long enough to find that ball in his zone. That's good cricket, good smart cricket. Straight hit, nice shot. Smashing that one between long on, long off. Gives you 13 runs of the over. This fight is still on. गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन से बाला बाला. फील्डर देर तक दिलचस्पी लेते रहे, लेकिन वो इतने कदावर नहीं थे कि इसे हाथ ले पाते. एक और छक्का हसन अली का. वो हवा में खेले और ये कैच हो गए. इरफान ने कोई गलती नहीं की. ये वाइड गेंद थी, ज्यादा तेज भी नहीं आई, और हसन अली बिल्कुल देख सकते हैं आउटसाइड वाइड की लाइन के बॉल की है. जाती बॉल को उन्होंने छेड़ा है और आसानी से कैच लेने में कामयाब रहे हैं इरफान. हसन अली 25 रन बनाकर वापस 144 पे 7. बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए. बहुत वेरिएशंस यहां पर उन्होंने दी है. ये बॉल भी फुलर थी, वेरिएशन ही थी थोड़ी. रन आउट कर चुके हैं यहां पर. 2 रन लेने की कोशिश की थी और बाउंड्री से तेज फील्डर आए हैं. जहां रिजवान थे फील्डर और तवक्को नहीं कर रहे थे इतनी तेज थ्रो की. ताहिर बेग ये आउट हो जाएंगे और इस ओवर में ये बड़ा धचका होगा. ये आखिरी रन आउट है, आखिरी विकेट जो ताहिर की है. बहुत इंपॉर्टेंट विकेट. बाउंड्री से राइडर तेज आए हैं, एक हाथ से पकड़ के सीधा थ्रो की है. बेहतरीन थ्रो थी, डायरेक्ट कीपर के हाथों में, और आप आसानी रन आउट करने में कामयाब रहे. ताहिर बेग ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, काबिल तारीफ 77 रन बनाए 146 पर 8. और एक और विकेट हो सकती है. जी हां, निसार ने गेंद को आ लिया और अम्माद भट्ट 1 रन बनाकर वापस गए. जैसा कि हमने पहले भी कहा था, यहां पर हुसैन तलत ले सकते हैं आके विकेट ब्रेक थ्रू देंगे, और 3 विकेटें उन्हीं के ओवर में गिर चुकी हैं. 19 का रन रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है. लाजमी था कि इसी तरीके के रैश शॉट्स देखने को मिलेंगे. 4 रन्स फिर से यॉक करने के लिए गए, लेकिन लाइन से बहुत ज्यादा भटक गए थे और बोल्ड हो गए. यॉक करने में कामयाब हुए निसार, और इस तरह सियालकोट की बिसात लिपट गई. 151 पर 185 का हदफ उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ इस मुश्किल पिच पर. और ये बड़ा अपसेट जो लाहौर ब्लूज ने किया है, ये क्वार्टर फाइनल जीतकर. ताहिर ने बड़ी उम्दा बैटिंग की मुश्किल पिच पर. 47 गेंदों में 77 रन बनाए. रन आउट होने से पहले हुरैरा और मोहसिन जल्दी आउट हो गए थे. अयाज भी खातिर खा अच्छी बैटिंग नहीं कर सके. अफजल मंजूर को प्रमोशन मिली बैटिंग में, वो शुएब मलिक से पहले आए, लेकिन 10 से आगे नहीं निकल सके. और शुएब मलिक 20 और आखिर में हसन अली के 25 रन भी नाकाफी साबित हुए सियालकोट के लिए, और पूरी टीम 151 पर सिमटी. बॉलिंग की बात की जाए तो 5 बॉलर्स ही कुल मिलाकर इस्तेमाल हुए. हर बॉलर ने विकेट लेने में कामयाबी दिखाई है. इरफान, निसार, रिजवान, हुसैन तलत
4 बॉलर से 2-2 विकेट लेने में कामयाब रहे। बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं सियालकोट की और हर इंटरवल पे उन्होंने ब्रेक थ्रू देने में कामयाब रहे हैं। सलमान 1 विकेट के साथ आसानी मैच जीतने में कामयाब रहे। लाहौर ब्लूज 184 रन बनाने में कामयाब रहे थे। उमर 65 बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए निज़ार ने 21 और हमाद 19 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि उसामा मीर 2 विकेट और हसन 4 विकेट लेने में कामयाब थे। अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए उसने बहुत कम स्कोर्स में। सियालकोट जवाब में 18.5 में ही ये गेम खत्म हो गया। 9 विकेट लेने में कामयाब रहे। लाहौर ब्लूज 155 रन करने में कामयाब रहे। ताहिर हसन मलिक कुछ रन जरूर बनाए। ताहिर ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। हुसैन, निसार, रिजवान 2-2 विकेट ले सके। इसी तरह लाहौर ब्लूज 33 रन से बासानी ये मैच जीत चुका है।